कहते हैं हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, तो उसी तरह से एक शेर से मैंने भी बनाई है कि जो भी अंग्रेजों जैसे दिखते हैं वो हो अंग्रेज, ये कंफर्म नहीं है। दरअसल आज मेरे साथ दो ऐसे युवा बैठे हुए हैं जो भारत में अभी अभी आए हैं, एक हफ्ते पहले ही आए हैं, लेकिन एक बड़े मोटिव के साथ वो उत्तराखंड में आए हैं। आज मेरे साथ जॉन और सेबेस्टियन यहाँ पर है, इनसे बात करेंगे ये यहाँ पर क्यों है। पहले वेलकम टू इंडिया। Thank you, TC. Thank you for having us today. A pleasure. All right, welcome sir. Thank you, TC. All right, so they've been calling me TC because they not pronounce नहीं कर पा रहे हैं ये त्रिभुवन चौहान। So आप लोग भी समझिएगा और हम थोड़ा धीरे भी बोलेंगे, कहीं पर आप एक्सप्लेन करना होगा मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। इन्होंने दरअसल एक टीम बनाई है, एक कंपनी बनाई है, जना मीन्स आम आदमी, जो हम बोलते हैं आम जन। तो आम जन को ध्यान में रखते हुए पूरा ये उत्तराखंड को इन्होंने चूज किया है ताकि ये यहाँ पर वेस्ट मटेरियल को दूर कर पाएं, उन प्लास्टिक को जो हमारे लिए दूभर हो चुका है, हमारी केवल प्राकृतिक आपदाओं का जो अंबार बना हुआ है आज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज और सब चीज, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इनसे बात करते हैं। पहले जॉन, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू कम फ्रॉम एंड व्हाट इज योर मोटिव टू कम हियर? Sure. So I'm coming from France originally. I'm a son of a farmer, so I grew up in a farm. I'm deeply connected to nature. And today I live in Barcelona, Spain, where I've been working in the sector of plastic recovery for about 2 years. And basically what I notice is that if we don't take plastic from a global perspective, we will never solve it. So basically today you have around 90% of all the plastic waste that is entering our oceans, the oceans that we all share across the planet, that is coming from a few hundred rivers in Asia, Africa and Latin America. Why is that? Is because Western countries still ship a significant portion of their plastic waste to those regions. And those regions usually lack of waste management infrastructures, so that compounds the problem. So those countries cannot keep up with all this new waste generated from those two sources. So we believe that this needs to be a shared global challenge, working hand in hand with the North and the South to try to mitigate the plastic pollution. इनका कहना क्या है कि पिछले 2 वर्षों से ये इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बार्सिलोना में। ये फ्रांस से आते हैं वैसे, लेकिन काफ़ी समय से बार्सिलोना में रह रहे हैं और जो चीज़ें इन्होंने की हैं अभी तक समझने के लिए, वो इन्होंने देखा है कि किस तरह से जो तमाम प्लास्टिक का वेस्ट है, जिसकी बात हम भारत में भी कर रहे हैं कि प्लास्टिक बैन करें, कई राज्यों में ये हुआ भी है, कई राज्यों में हो भी रहा है, लेकिन कई जगह हम इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। लेकिन ग्लोबल स्तर पर इन्होंने समझा है कि ये जाकर सारा वेस्ट कहीं ना कहीं जाकर समुद्र में मिल रहा है और समुद्र को दूषित कर रहा है। ये तमाम चीज़ें कितनी हानिकारक हो सकती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले हमारे साथ सेबेस्टियन भी है यहाँ पे। हाय सेबेस्टियन, सो कुड यू टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट यू, व्हाई डिड यू गेट इनटू दिस सोशल कॉज दैट? Absolutely. So my name is Sebastian and I'm from Sweden. Okay. I am also coming as the son of a farmer. And I've seen how the plastic pollution crisis is affecting us worldwide, and it's not pretty. And what the visible plastics that we can see is a huge problem, but what most people do not see is the micro and nanoplastics that is already existing in our bodies, which is in the breast milk of the mothers and so forth. So it's a huge global challenge and it's something that we have to address. क्या बात है। इन्होंने माइक्रो और नैनो की भी बात की है कि किस तरह से प्लास्टिक छोटे छोटे से रूप में और बड़े बृहत रूप में हम सब का जो एटमॉस्फेयर है उसको खराब कर रहा है। अब हमें समझना होगा, हम यहाँ पर बातें बहुत करते हैं लेकिन उसके बारे में कर कितना पाते हैं। वो कुछ एक वीडियो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक ड्रिंचिंग ग्राउंड की भी दिखाई थी, जहाँ पे गाय वो प्लास्टिक खा रही थी। I'm not too sure whether you guys understanding but I'm telling them that the kind of drenching ground that I've been to, what are the waste there, and you must have seen that. I have shown the video to them also. मैंने ये वीडियो इनको भी दिखाया और उसके बाद मैं जानना चाह रहा था कि जब ये उत्तराखंड इन्होंने चूज किया है तो क्या कारण रहा है कि ये उत्तराखंड, हिमाचल में भी ये है अभी, और जना जो इनकी कंपनी है ये लगातार ही इस पर काम कर रही है। तो उत्तराखंड क्यों चुना? Why did you choose उत्तराखंड over? So we are staying here in India for the first time. We stay 1 month, the entire month of July, and we have chosen to come first to Uttarakhand and Himachal because this is the home of the Indian Himalayas. The Indian Himalayas has a symbolic value, and
we were surprised to find plastic waste in up to the highest peaks of the Himalayas. So plastic is everywhere, and this is basically here in Uttarakhand the source of all the water from the glaciers that flow into India, and ultimately those rivers reach the oceans, right? So if there is plastic in those rivers, you can try to combat plastic waste on the coastal regions, but the waste will keep coming from the rivers. So we want to protect, to find solution to help those holy region, Uttarakhand and Himachal, to tackle plastic waste, to prevent those waste to entering the rivers and ultimately the ocean. क्या बात कही है इन्होंने, वाह। मैं कायल हूं, क्योंकि हम भारतीय होने के बाद भी और उत्तराखंड होने के बाद, उत्तराखंडी होने के बाद भी इतना नहीं समझ पाए शायद अब तक, जो ये कह रहे हैं कि जो पानी है वो ग्लेशियर से ही निकलता है और ये तमाम पानी जाकर नदियों में मिलकर फिर जाकर समुद्र में मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी चीज मिलती है, वो है वेस्ट। और अगर हम नीचे जो हमारे तराई के क्षेत्र हैं वहाँ सफाई कर भी दें, लेकिन जब ऊपर से आता रहेगा तो तराई पर भी हम क्या कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने चूज़ किया कि हिमालयाज़ को चूज़ करेंगे। क्या हम इस तरह सोच पा रहे हैं? ये डेफिनेटली एक अच्छी मुहिम इनकी तरफ से है। So Sebastian, when you say that you would go to the mountains, how do you plan to clean this stuff, or how do you encourage people to be a part with you, and then maybe for a social cause, of course, how would people connect to you? And actually, why would they connect to you? So first of all, as it is a social enterprise in a sense, we need to make sure to spread awareness, because a lot of people here are simply not aware of the problem and what it causes down the stream, so to say. So it's a lot of awareness that has to be made. We need to collaborate with the local governments, with local NGOs, local organizations, to basically reach the people on the ground, because the change is a behavioral change and it takes a lot of time. So you need to have that connection with the people, which is why we need to have strong collaborations here in the local regions. Okay, so you're basically targeting only the NGOs or the government, or you're targeting individuals also? The community in general, because plastic pollution is a shared crisis. It's not something that one person or one authority can handle. It has to be something that is controlled and managed from the top to the bottom, starting with, of course, authorities and governments to be able to regulate and provide incentives to drive that change. It's not the people in the bottom that is going to be driving the change. That's so true. कितना अच्छा बोला है इन्होंने कि हर व्यक्ति को हमें साथ लेना होगा, केवल हम गवर्नमेंट और एनजीओ को नहीं, बल्कि हमें कम्युनिटी से भी, यानी कि हमारी जो सोसाइटी में लोग हैं इनके साथ भी आगे आना होगा और साथ मिलकर प्लास्टिक पर काम करना होगा। एक चीज, देयर इज वन थिंग दैट इज इन माय माइंड राइट नाउ, व्हेन वी आर अवेयर दैट प्लास्टिक इज गोना बी अ हार्मफुल थिंग इन द फ्यूचर, why don't we just avoid using it, or maybe avoid the manufacturing? इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि मैन्युफैक्चरिंग पे, क्योंकि यहाँ पर देखा होगा ठेली वालों के, इन तमाम लोगों के चालान जरूर कट रहे हैं कि आप प्लास्टिक ना यूज़ करें, बट वो मैन्युफैक्चरर तक क्यों नहीं पहुँचते? Why don't they stop manufacturing the plastic? Well, plastic is still a necessary material for today's society. It does help a lot for progress, growing in various sectors like the healthcare industry, for example, or sector. We can make a lot of new things made out of plastic, like Protexis and all of this. The big problem is the single-use plastic. This is the plastic that basically have a lifespan of less than 1 minute from when it is open to be thrown in the environment. So that's the most critical plastic that is harming today wildlife, the communities, our bodies, and the environment in general. So that's what we will be targeting today, and I think that this has to come from a global actions. We have to involve the global brands as well, that needs to be responsible for the kind of packaging that they put into the market, but also implement more waste management infrastructures from exactly. So the brands need also to be involved into that. I'll just cut you down here. एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोली है। दरअसल हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग पर, इन्होंने ये भी बताया इसेंशियल भी है कहीं ना कहीं, चाहे हम कोई भी पैकिंग देख रहे हैं, रैपर्स देख रहे हैं, सब जगह ये हो रहा है। पर एक बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने चीज बोली है कि जो ब्रांड्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए
कि वो अपने द्वारा फैलाए गए इस वेस्ट को कलेक्ट कितना कर रहे हैं या रिकवर कितना कर रहे हैं. हैव यू सीन दीज थिंग्स हैपनिंग बैक होम, like companies they recovering their plastic from the market? So where we come from, we're very fortunate because we have very robust waste management infrastructure in place already. Okay. There is a lot of financial incentives through taxes to fund these initiatives. It's also a lot more advanced in terms of awareness for the people, so they understand more the consequences of throwing it into the nature. So where we come from, the problem is not the same. It still exists, but it's nothing compared to what we see here, and that is also one of the reasons why we are here. In a short sense, you can say that if a brand wants to do an impact in Sweden, for example, $1 in Sweden does not buy a lot, but $1 here in India can truly have an impact. And that is partly the reason as well why we're here, to really be able to reach the people and help them through those kind of funds. कितनी बड़ी बात है. और मुझे लगता है जो इन्होंने बोला है कि जो ब्रांड्स हैं बैक इनके जहाँ स्वीडन की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ब्रांड्स अपने द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक को वापस ले लेते हैं और आई एम नॉट टू श्योर वेदर दे डू 100% रिकवरी और what is the percentage of recovery, like any brand throwing off the plastic in the market and then getting back, how much percentage? So today this is very hard to say. There is no data on how much they are able to collect, but basically any lump sum idea or a ballpark figure? So basically what we want to create, I think this is the most important part of the motif behind the startup Jana that we are creating, is that we want to create bridges, connections between the global north with the global south to basically support waste management infrastructures, and most importantly support the local waste pickers in Himachal, in Uttarakhand, to basically recover plastic, be incentivized to also recover the low value plastic. This is a major problem because the low value plastic has no really business economy behind it, because it's hard to recycle. The recyclers are not a lot interested to collect this plastic. So you need new actions to basically incentivize also to recover this plastic and not go only for the PET bottles, for example. That's correct. Because we want to clean all the plastics from the landscape and the nature of Uttarakhand and Himachal. बिल्कुल, क्या सही बात है ये. इन्होंने एक बात कही है यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, हमें हाई वैल्यू जो प्लास्टिक है उसको वैल्यू करते हैं. जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, आप देखिएगा हर जगह उनको उठाने वाले बहुत जल्दी आ जाते हैं. लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो लो वैल्यू प्लास्टिक है, यानी कि रैपर्स हो गए, हमारे चिप्स के पैकेट्स हो गए या कुछ और इस तरह से, जो कि बस 1 मिनट जिनकी लाइफ स्पैन, सही बोला है इन्होंने, पहले तो पैक है जो ही खोला खाया उसके बाद फेंक दिया, सो उसकी 1 मिनट की लाइफ स्पैन है, लेकिन वो कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है. दे both are doing really nice work and I wish government shall look into this. अगर ये CM हाउस तक जा रहा है या फिर अदर जो हमारे ज़िले हैं जहाँ पर नगर निगम है, नगर निकाय जहाँ भी हैं, जिला पंचायतें हैं, अगर ये वीडियो वहाँ तक जा रहा है और देखा जा रहा है तो आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनको इनके कॉज के साथ इनके साथ मिल सकते हैं. क्योंकि अगर हम सब लोग भी अवेयर हो गए, सोचिएगा स्वीडन से आकर हमें यहाँ पर अवेयर कर रहे हैं ये दोनों, और उसके बाद धीरे धीरे इनके प्लान्स बहुत सारे हैं. अभी ये आज रामनगर भी जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट में किस तरह से हो रहा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में हम चले तो जाते हैं लेकिन क्या कुछ पीछे छोड़ जाते हैं. ये सभी चीज़ें हमने तुंगनाथ जी में देखी हैं, हमने बद्रीनाथ में देखी हैं, केदारनाथ जी में देखी हैं, तमाम जगह ये हो रहा है और ये सभी माउंटेन्स पे हो रहा है. अगर ये दो लोग यहाँ पर आके अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए और इसीलिए हम भी यहाँ पर आए. बट सेबेस्टियन एंड जोहान, thank you very much for your initiative, mate. And do you have any specific message to give to the government or to certain NGO who are working in this, or maybe some communities? Do you want to give some message out there? Absolutely. So we know that there are many solutions out there, and there is not an easy way, but there are many different ways. And if we can work together, there are much more potential to actually uncover those things and actually implement them. But it has to start from an incentive level as well with the government, because we cannot implement all of these solutions without the approval and the support of both the state and the local governments. So that would be my message. Please help us to help the people. What a great message. All right, I'll come back to you also. Johan, any two-liner message that you want to throw away to the people around जो सुन रहे हैं अभी? Yeah, well, this is my first time in India. I really enjoyed the time spent in Himachal and Uttarakhand. You live in a beautiful region of the holy Indian Himalayas.
this region needs to be protected, and I'm ready to spend a lot of efforts to help you guys walk towards a more regenerative future. चलिए, बहुत अच्छी बातें इन्होंने दोनों ने कही हैं और साथ के साथ एक अपील भी की आम इंसान से कि इनके साथ जुड़े, साथ आगे आए। इन्होंने कहा है कि उत्तराखंड बहुत सुंदर है, हिमाचल बहुत सुंदर है, हमें इनको साथ में सुरक्षित भी रखना है वेस्ट प्लास्टिक से। तो कैसे ये सारा चलेगा? ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच अगेन। इट्स फ्रॉम ऑल उत्तराखंड एंड यू वुड सी कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें, कैसा इनके साथ बात करके आप लोगों को भी लगा, और जुड़े रहिएगा। और इनसे अगर संपर्क करना है, कमेंट में अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर को छोड़ दीजिएगा ताकि आप इनसे संपर्क जरूर कर पाएँ। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।